So actionable metric, something is there must be a knob to control it. If it is not controllable, then it is not actionable. मैं किसी भी पर्टिकुलर मेट्रिक को अगर कंट्रोल कर सकता हूँ, बहुत लेमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, किसी भी चीज को मैं अगर कंट्रोल कर सकता हूँ तो वो मेरे लिए एक्शनेबल मेट्रिक हो गया है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर मेट्रिक को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ तो वो मेरे लिए वैनिटी मेट्रिक। दैट दिस इज माई वाई एक्सिस, दिस इज माई एक्स एक्सिस। यहाँ पर जितनी भी चीजें आने वाली है किसी भी चार्ट में, वो मेरे लिए या तो कंट्रोलेबल वेरिएबल होंगे या तो नॉन कंट्रोलेबल वेरिएबल होंगे। और इस लाइन पे जो भी डेटा आएगा वो मेरे लिए क्या होगा, मैट्रिक होगा, इधर actionable or vanity. So guys, today definitely we are going to discuss about the actionable and vanity metric, and I am damn sure that uh, having this debate will give you the idea about and the understanding about the metrics as well as the actionable and vanity metric in the STM especially, I would say. So आपके जो भी डाउट्स हैं डेफिनेटली वो क्लियर होंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। सो दैट इज आर टुडेज मोटो एज वेल कि जितना ज़्यादा नॉलेज हम आपके साथ शेयर कर सकें उतना ज़्यादा अच्छा हो। So before I start, right? Before I start, I would like to ask a question from all of you. So मैं भी जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर आपको अपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। Yes, you can. I will give you the question and the four options will be there. जो सा भी ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है या फिर आपको लगता है कि ये ऑप्शन सही है मेरे अकॉर्डिंग, तो यू नीड टू जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स समथिंग लाइक विच इज A, B, C or D, right? So my question to all of you, something is this. So guys, I am expecting that please everyone answer this question in the comment box mentioning A, B, C or D according to your participation. Okay. So the question is basically how long have you been in the stock market? आप कब से कितने समय से स्टॉक मार्केट में हैं, ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, वो भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, समथिंग लाइक। So I'm I'm like yeah, see, I'm getting the answer from the everyone. I guess Shyamji did not answer till now. श्याम जी सर, आप आंसर करेंगे प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। आई गेस श्याम जी इज द बिजी वन, ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग आवर क्वेश्चंस। ओके फाइन। सर आप अनम्यूट भी कर सकते हैं श्याम सर। Okay, so like everyone has participated in the different answers from the audience, that most of, I would say, like so most of people ranging around mixed. There are mixed crowd, I would say, definitely, because people are saying A, B, C, and D as well. I think So mostly it was B, like between 3 to 5. yes, 3 to 5 years is the maximum Yeah, portion to belong to the audience right now. right. Okay, okay, got it. So it's a decent number, I would say. 3 to 5 years is a decent point of time during in the market. So moving forward from here, सी हम लोगों ने अभी तक एक्शनेबल मैरिटी मेट्रिक के बारे में डिस्कशन किया है, बट द मेनी ऑफ टाइम्स पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड इवन व्हाट इट इज अ मेट्रिक। एक्चुअली एक मेट्रिक ही होता क्या है? तो इन अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन पार्ट आई वुड टेल यू दैट व्हाट इट इज लाइक मेट्रिक। बट before discussing about the metric on an actionable or vanity, so there are these some point over here that you will learn or you will understand the key learning from the today's debate कि क्या क्या चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, and these concepts will be clear during the debate as well as the conclusion in the at the debate. Okay. So these are the points. So what is the metric? Understanding of actionable and vanity metric. Understanding about the variables. What is the variable होते क्या है? What decision we can make with the help of these metric. जो हम metrics के बारे में बात करने वाले हैं उसके basis के through हम लोग क्या help या फिर कौन कौन से decision ले सकते हैं basically. That things will be discussing in the today's debate.
So moving forward, what is a metric? So a metric is a simply measurable value that helps you track, evaluate and performance progress or status of a something. ये तो एक डेफिनेशन हो गई. अगर मैं इसको बहुत एक सिंपल से एग्जांपल वे में बात करूं तो थिंक ऑफ इट इज अ नंबर विद मीनिंग. बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जो कोई काम के नहीं होते और बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जो काम के होते हैं. So the number which tells you how much, how many, or how well something is doing, that would be considered as a metric form. So in the example, I would say monthly revenue. In a business, monthly revenue is a metric that measures how much money you earn each month or how much revenue is going to be each month. Similar, steps per day. In fitness, steps per day is a metric that measures your daily walking activity. वो आपको बताता है कि आप इतने स्टेप चले. अभी इतने स्टेप चलने के बाद आपका कितना कैलोरी कम हुआ, कितना बर्न कैलोरी हुआ, ये सारी चीजें, कितना डाइट किस हिसाब से लेना है. सो दीज आर द थिंग्स यू कैन मेक द डिसीजन ऑन दिस बेसिस कि हाँ अच्छा मैं इतना कदम चलूंगा तो मेरा इतना कैलोरी बर्न होगा. अगर मुझे 100 कदम चलने पे 100 कैलोरी बर्न होता है तो मुझे, अगर मेरा टारगेट है 500 कैलोरी बर्न करने का, तो मुझे 500 स्टेप चलना पड़ेगा. सो दैट इज हाउ यूजिंग द मेट्रिक वी कैन मेक द डिसीजन, राइट. Is there any doubt related to these concept कि metric होता क्या है? With the example I have explained the metric क्या है. Guys, understood? Yes or no, please? At least give me a thumbs up so Uh, that we'll be able to understand. Almost it was an S, but just one quick question. Okay. Uh, so like metric in the sense, maybe it is something like a forecasting, something like that, No, or it is not exactly forecasting. It could be anything. A number which shows you the information, basically. So okay. it will be a metric. Forecasting is quite a different thing, I would say, basically. Even you can forecast the numbers, but numbers are the metrics that tell you Okay. how much, what to do or what to not to do. Okay. Okay, then got it. Okay. So moving forward from over here, types of metric, I would say that broadly metric can be classified into two parts: actionable metric and the vanity metric. So actionable metric क्या होते हैं? With the help of these actionable metric, हम लोग कुछ एक बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सके या फिर किसी पर्टिकुलर चीज को, परफॉर्मेंस को बढ़ाना या घटाना हम उसके डिसीजन के थ्रू कर सकते हैं. और वैनिटी मेट्रिक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि दिखने में बहुत अच्छे रहते हैं बट उसका एक्चुअली कोई यूज नहीं होता. कुछ नंबर्स मैंने आपको दे दिए. अभी मैं बोलूंगा कि 100 लोग 100 लोग इस पर्टिकुलर डिबेट में एक्टिव है और दूसरी जगह मैं बोलता हूँ कि बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर डिबेट में एक्टिव है. सो अगर मैं नंबर ऑफ पीपल की बात करूं तो मुझे एक्शनेबल मेट्रिक विच इज फर्स्ट थिंग, वो मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि 100 लोग है तो 100 लोग के हिसाब से मैं कुछ ऐसे प्लान कर सकता हूँ. बट दूसरे पार्ट में मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बहुत सारे का मीनिंग कितना हुआ? इट कुड बी एनीथिंग बट इट इज नॉट गिविंग मी द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कि क्या हो रहा है. दिखने में बहुत सारा, लिखने में बहुत अच्छा, सुनने में बहुत अच्छा, अरे बहुत सारे लोगों ने अटेंड किया, बट एग्जैक्टली द इंफॉर्मेशन शुड बी कि कितने लोगों ने अटेंड किया. Understood now? Is that clear? That what is the actionable metric and the vanity metric? It is a generalized information I'm giving you. As soon as we are moving on to the part of the particular STM, the definition will be something somehow different. Okay. So moving forward over here, actionable and vanity metrics in the STM. So पहला part, that it is not necessary that every component number is a metric in any strategy. अभी मैक्सिमम ऑफ यू अवेयर अबाउट दी एसटीएम. आप लोगों को, काफी लोगों को एसटीएम का अंडरस्टैंडिंग है. तो हम लोग एसटीएम में बहुत सारे नंबर्स देखते हैं. तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर नंबर एक पर्टिकुलर मैट्रिक हो. इट कुड बी एनीथिंग. इट कुड बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, समथिंग लाइक. सो इन अ चार्ट, if any data showing on the x-axis, it cannot be considered as metric at all. It will be a variable.
इसका एग्जांपल मैं आपको अभी 2 मिनट में एक चार्ट के थ्रू क्लियर करूंगा कि मैं एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के बारे में क्या डिस्कशन कर रहा हूं यहाँ पर। उसके केस में आपको समझ में आएगा कि जो भी चीज है, अगर कोई सा एक नंबर है वो एक्स एक्सेस पे आता है तो वो मेरे लिए मेट्रिक नहीं होगा, दैट विल बी अ वेरिएबल फॉर मी। इज दैट क्लियर? Yes. आप लोगों को क्लियर है ये पार्ट? यस और नो प्लीज एटलीस्ट। Yes. Okay, okay, okay. And again, if a data considered as a metric, then it should be on the y-axis of the chart. I have something like the chart. ये मेरे लिए y-axis हो गया, ये मेरे लिए x-axis हो गया। यहाँ पर जो भी चीजें आएंगी, that would not I'm not going to consider that a metric. वो metric भी नहीं है मेरे लिए। That would be the variables. और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो वो मेरे लिए metric होंगे। अभी यहाँ पर क्लैरिटी नहीं आई है कि वो एक्शनेबल होंगे या मेरिटी होंगे, बट आई एम जस्ट सेइंग यू कि आपको ये क्लैरिटी आनी चाहिए कि कब हम उसको मैट्रिक बोल रहे हैं और कब उसको वेरिएबल बोल रहे हैं, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ मूविंग फॉरवर्ड अगेन, actionable metric and the vanity metric. So actionable metric, something is there must be a knob to control it. If it is not controllable, then it is not actionable metric. मैं किसी भी पर्टिकुलर मेट्रिक को अगर कंट्रोल कर सकता हूं, बहुत लेमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, किसी भी चीज को मैं अगर कंट्रोल कर सकता हूं तो वो मेरे लिए एक्शनेबल मेट्रिक हो गया है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर मेट्रिक को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं तो वो मेरे लिए वैनिटी मेट्रिक। इज दैट क्लियर गाइस? यस और नो? Yes. Yes. Nishant. Okay, okay, got it. So actionable again, if I am able to control the the metric, then it would be a actionable. If I am not, then it is a vanity. In case of vanity, there are a few things written over there that whatever happens in this name of price, that becomes a vanity metric. चलिए मैं आपको आगे एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत सारी चीजें और क्लियर होंगी। These are the theoretical definitions of the actionable and vanity metric. And the variable, what about the variable? So there are two types of variable, which is controllable independent variable and non-controllable independent variable. ठीक है, ये controllable independent variable क्या होते हैं, non-controllable independent variable क्या होते हैं, we are going to discuss about it definitely. So in this chart you can clearly see, right, that this is my y-axis, this is my x-axis. यहाँ पर जितनी भी चीजें आने वाली है किसी भी चार्ट में, वो मेरे लिए या तो कंट्रोलेबल वेरिएबल होंगे या तो नॉन कंट्रोलेबल वेरिएबल होंगे। और इस लाइन पे जो भी डेटा आएगा वो मेरे लिए क्या होगा, मैट्रिक होगा, इधर एक्शनेबल और वैनिटी। इज देयर एनी डाउट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट आई हैव डिस्कस्ड टिल नाउ? Yes or no, at least? No. Okay, okay. Nishant, I have one question. Yes, please. In y-axis, you say the actionable or vanity matrix, but actionable matrix is a fixed number, okay? And vanity matrix is a like we're not saying the fixed number; it's like a variable number, okay? Which is like not fixed. ऐसे नहीं बोल रहे कि 25 ही नंबर है और ऑप्शनेबल में 25 बोल रहे हैं और वैनिटी में फॉर एग्जांपल इज अ नंबर, ज्यादा नंबर है ऐसा बोल रहे हैं। तो माय क्वेश्चन इज कि वाई एक्सिस फिर कैसा हमारा ये होगा? इट वाई एक्सिस भी तो ऑलरेडी ये रहेगा लाइक वेरिएबल रहेगा ना? Javed, can you please repeat? I did not understand what you are saying. मेरा कहना ये है कि एक्शनेबल और वैनिटी मैट्रिक्स में जैसे आपने एक्शनेबल कहा कि फिक्स नंबर है, हम बोल सकते हैं कि ये फिक्स है, एंड नहीं, वैनिटी में आप I did not say fixed number. हाँ यहाँ पर जो भी नंबर्स आएंगे मेरे लिए, आई एम नॉट सेइंग दे आर हाँ द फिक्स नंबर। ये आपने पहले डेफिनेशन में कहा था ना कि लाइक अभी ऑडियंस इतनी है तो हम नंबर कह रहेंगे उसको, नंबर लाइक नंबर। और हाँ वैनिटी में हम बोल रहे हैं कि ज्यादा है, लाइक जैसे आपने कहा कि अभी हाँ, काफी इट वाज ऑडियंस है। ओके।
और वैनिटी में कहा कि सॉरी एक्शनेबल में कहा कि आपने इतने है नंबर, एंड वैनिटी में कहा कि काफी नंबर्स है या, करेक्ट है ना? अच्छा 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 ओके ओके तो मैं इन दैट सेंस आई एम अच्छा सेइंग अच्छा दैट y axis इज सो आल्सो अ वेरिएबल ना. नहीं नहीं so let me explain you Javed in that context I gave you the example of the generalized ओके. market के बारे में right या. now we are या. talking about the actionable and vanity metric in the STM इन दी एसटीएम. ओके. right so हाँ ओके. तो there is a इन y difference axis you take a matrix, and hmm in x axis you take a variable. variable Okay. variable Okay, that and is variable there controllable or are not. हाँ Yeah, there are controllable or non controllable. yes there can be two variables out there controllable हाँ. और non controllable जिसको हम कंट्रोल कर सकते Okay. हैं और कुछ को कंट्रोल नहीं कर सकते Yeah, राइट now okay, I got अभी it. इज दैट क्लियर Okay, नाउ fine. इट इज क्लियर राइट जावेद Yeah, fine. Fine. okay okay thanks lot Abhishek do you want to add anything in this context what I have discussed till now or would you want to take me further Yeah, Nishant, you can go further because pretty easy definitions. okay is there any other doubt that like Javed has already asked a question usko doubt tha Javed has a doubt now I am asking to everyone over here who is attending this webinar so is there any doubt guys यस सर. हाँ प्लीज सर विनय वाई एक्सिस पे जो डेटा शो होगा, जो नंबर शो होंगे, हाँ उसको हाँ ही मतलब हम मैट्रिक्स के अंदर कंक्लूड क्यों करेंगे, एक्स एक्सिस वाले डेटा को क्यों नहीं? ओके ओके क्योंकि एक्स एक्सिस पे जो डेटा हम ले रहे हैं बेसिकली उसको देखते देखिए एक्शनेबल मेट्रिक का मीनिंग क्या होता है एक्शनेबल मेट्रिक का डेफिनेशन है दैट कैन बी कंट्रोलेबल हम्म. इसलिए हम उसको वाई एक्सिस पे लिख रहे हैं नहीं सर, मैट्रिक्स जो हम प्लॉट करेंगे वो एक्स वाई एक्सिस पे ही आएंगे, और जो वेरिएबल्स होंगे वो एक्स एक्सिस पे आएंगे. हाँ सो रीजन क्या है इसके पीछे का, क्यों वेरिएबल्स एक्स एक्सिस पे आएंगे और क्यों मैट्रिक्स वाई एक्सिस पे आएंगे? बिकॉज वी आर टेकिंग दी कंसिडरेशन like I Basic. guess I am not I able to I I just explain. I think Nishan, you said that the x-axis and y-axis इसलिए लिए कि actionable matrix is controllable, right? So okay Vinay, I think the answer is that कि comparison के लिए लिया जाता है basically. तो कंपेयर करने के लिए उन्होंने लिया है कि actionable and vanity matrix in y-axis and variable like controllable or non-controllable in x-axis. So that is the graph ओके. basically comparison के लिए. Am I right, see Ishan? हाँ जावेद what is you're saying is somehow correct with the example I can explain as well to Vinay हाँ, yeah, कि right. हाँ see आगे बताए. ओके सो वाई एक्सिस पे जो भी एक पर्टिकुलर नंबर्स है राइट और यस. एक्स एक्सिस पे कुछ नंबर है तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अगर ये इसका मूवमेंट मेरे हाथ में नहीं है Right, ठीक है ये right, जैसे जैसे चलता जाएगा तो मेरे इस पर्टिकुलर मेट्रिक पे क्या उसका इम्पेक्ट पड़ रहा है right. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कंपेयर Yeah. विद द अदर नंबर सो जो Mm-hmm. जिस चीज से कंपेयर कर रहे हैं वो मेरे लिए वेरिएबल होगा बिकॉज इट इज Right, नॉट इन आवर हैंड right. एंड इन केस ऑफ over here numbers out there in the y axis so I am trying to figure out that हाँ अगर ऐसा ऐसा चीजें होगा या फिर ऐसा मूवमेंट होगा या ऐसा प्राइस का मूव होगा तो मेरे लिए मेरे स्ट्रेटेजी में क्या इम्पेक्ट पड़ेगा so that is what I am trying to figuring out so that is why I am comparing both the two like metric and the variables understood Vinay yes or no please यस सर. okay thank you now moving forward actionable and vanity metric in the STM. So here are the things or the like list of the actionable and vanity metric in the STM. Because earlier I said the key learnings. तो हम एक यहाँ पर ये डिस्कशन करने वाले हैं कि मेरे लिए actionable metric कौन से हैं, vanity metric कौन से. So here are the list
with the help of we can figure out or we can make the decision कि actionable metric extra cash, average cost और number of orders है. Similarly, vanity metric में ले ले stock value, profit, account value और ladder value. Now the question arises over here कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि मेरे लिए extra cash, average cost और number of orders are the actionable metric. Right? Now, moving forward to another part, which is vanity metric. So, before I talk about the vanity metric, I'll just try to understand and explain कि क्यों मैंने decide किया है कि actionable metrics extra cash, average cost और number of orders है. So, moving into the next slide, as you can see over. निशांत, I have one question. हाँ ये हाँ प्रीवियस स्लाइड में जो आपने एक्शनेबल और वैनिटी लिया है, उसमें वैनिटी में आपने लॉस क्यों नहीं दिखाया? कहाँ पर? वैनिटी मैट्रिक्स में लॉस क्यों नहीं दिखाया? या फिर आइदर इट इज अ पार्ट ऑफ एक्शनेबल और इट इज अ पार्ट ऑफ वैनिटी, बट लॉस इज नॉट मेंशन हियर. Okay, so you mean to say P&L, right? हाँ, आपने प्रॉफिट दिखाया है ना हाँ 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 वैनिटी right. में. हाँ, basically it is a profit and वेर both. इज लॉस? It is इट इज both. इन. मतलब बेसिकली ओके. बेसिकली पीएनएल की बात करते हैं हम. अगर ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट में रहेगा, नीचे जाएगा तो लॉस रहेगा. सो बेसिकली इट इज पीएनएल, नॉट इंडिविजुअल प्रॉफिट. आई शुड हैव बीन राइट इट डाउन एज अ पीएनएल इंस्टेड ऑफ या प्रॉफिट. या दैट्स राइट राइट राइट, अग्री, टोटली अग्री. ओके. गो फॉर. राइट, ओके. सो एज आई सेड अर्लियर दैट अगर एक्शनेबल मेट्रिक है तो मैंने फिगर आउट कैसे किया कि एक्शनेबल मेट्रिक है, बिकॉज देयर शुड बी अ नॉब टू कंट्रोल दिस. अब मेरा एक क्वेश्चन है सभी लोगों से, कैन I manage or control the extra cash? Yes or no? Yes. 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 Okay, Yeah, probably yes. probably yes. Can I manage the average cost or control the average cost? Yes, you can. Yes. Yes. Okay, see guys, I want everyone's participation over here, because if anyone is there that able to not understand what I'm just trying to say और मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, so please ask, because we are just trying to understanding the concept. We are not trying to memorize the things. So like making extra cash, probably, yeah, we can do it within it'll be within our hands, right? Yes, yes, yes. See, I would say actionable metric का एक simple definition था which we can control over that, right? But Exactly. हाँ, जो कि प्राइस पे डिपेंडेंट नहीं है बेसिकली, आई वुड से, Mm-hmm. right? So that's how we have got the actionable metric then in case of extra cash, because if we change the parameters, something like this is a variable. See, in the next slide, that is what I have mentioned over here, that controllable variables and non controllable variables. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्लैरिटी आएगा कि मेरे एसटीएम में ऐसे कौन कौन से वेरिएबल है जो मेरे हाथ में है, जिनको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, और एसटीएम में ऐसे कौन कौन से वेरिएबल है जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता. सो दीज आर द वेरिएबल्स. अंडरस्टूड नाउ? इंडिपेंडेंट बेसिकली. Like let's say if I've put some 100 stocks, let's say for an example, I've put some stocks on one of the thing, like whatever it may be, and probably, let's say if the price got increased, so I'll put more stocks, and let's say if price got decreased, maybe I'll maybe wait or maybe sell few of the stocks. So maybe in that kind of a scenario, so what will be like controllable and non-controllable? Sorry Sandeep, I did not get you. What are you trying to say? Can you please? Let's say I've put some stocks in
one of the thing, like let's say maybe the price of the stock is like 50 or something. Okay, I've 50 of put the some stock price is the 50. Okay. I've put some stocks, Okay. and let's say it got increased. Okay, fine. So I've just I have just put some more stocks on it. Okay. So that is one kind of scenario. And let's say if the same thing I've put some stocks the same on 50 price and it got decreased. So you are trying to say that I bought 5,000 shares at 50 rupees. Price Mhm. goes up, you sold something. Yeah, I sold something, and that is one scenario. Okay. And the other scenario was like maybe I have put the same kind of stocks and the price got decreased. Okay. So you So in bought. that kind of a scenario, like what can I control, like, or what it's not controllable variable. Okay, okay. That is what you are asking over here. So Yes. see, as you can see that price, first is the price, है ना? You Mm-hmm. took the, see over here, see the example, number of stocks which is 5,000 you bought Mm-hmm. and Yeah, 50 is the price. That is what you are saying. correct. Either way price move. It can be Yeah, 50 or down or 50, up. it is 40. Yeah. Right. So in that case, 50, which is not in my control, Mm-hmm. even if I want to, but I cannot. Why? Because the price is in not in my control. अगर मैं चाहूँ तो price को 55, 56, 57 नहीं कर सकता, right? Correct, correct. I cannot reduce it. But in case of number of stocks, I can do it. How? Let's say for an example, Mm-hmm. price goes down to 49, Okay. right? Mm-hmm. And if I want to buy more number of shares instead of like as you can see that in the STM there are 200 shares for every 1 rupee drop we buy, right? Right. But additionally I can buy 1,000 number of shares at this point of time. So that's how I can change the number of stocks. Okay, so Irrespective. that would be controllable. Yes, that is what I'm trying to say. These are the controllable variables. Even if STM is working, Mm-hmm. it's normal simple mechanism, but still I can change the number of stocks in my account by large buying or large selling. Either I can reduce those numbers or I can increase those numbers. Okay, okay. I hope now you have understood what in which Yes, sense yes. I'm Now, saying. yeah, now I get it. Then about like what is that open order price? Okay. So basically in a general see, okay, we are moving forward. Oh, I'm okay. having some sort of chart, right? Okay. So in that case, I'll explain you what is the open order price. But in a layman Sure. language, I'll just say you now, as you know that at 50 rupees, we have already two open orders, right? Okay. At the 51, at the 49. So Right. for now, just for in a summary, I would say these are the two open orders right now. Mm-hmm. So that is what open order for now just. Oh, okay. It might be Okay. like up or down. Okay, got it. Huh. It could be like either upside or the downside. Got it. Got it. Yeah, I'm clear. Yeah. Okay. Thanks. So Thanks, why I'm Nishan. saying the okay. So why I'm saying non-controllable variables over here is the price because we do not have any control on the price, even the future average purchase price. Why? Because ultimately the future average purchase are deriving from the price. अगर प्राइस 50 है तो ऑलरेडी मेरा फ्यूचर एवरेज परचेस प्राइस 25 होगा. अगर मेरा प्राइस 52 है तो मेरा एवरेज परचेस प्राइस 26 होगा. आई कैन नॉट चेंज मैन्युअली कि मेरा फ्यूचर एवरेज परचेस प्राइस मैं 30 कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ. इट इज नॉट इन माई हैंड. एंड सिमिलर विद द ओपन ऑर्डर प्राइस. एज द प्राइस मूव्स, my open order price will be changed automatically according to my price. So that is why I'm saying guys कि मेरे लिए जितने भी नॉन कंट्रोलेबल वेरिएबल्स है अगर वो एक्स एक्सिस पे आते हैं, सो जो मेरा वाई एक्सिस पे है दैट वुड बी माय वेनिटी मेट्रिक. बाय बिकॉज आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल द वेरिएबल्स. अब similarly over here you can see that order size I can change. Yes or no, please? Yes.
Yes, you can. Yeah. Step size, I also can change the step size. Steps above, I can also change. Target, I also can change. Number of stocks, I also can change these things. So that is why I'm Correct. saying these are the controllable variables. Okay. And with the help of these controllable variables, I would be able to increase the performance of these actionable metrics. Nishant, I have doubt here. What is the average cost you mentioned in this action? Yeah. Exactly. Even I have that thing. Average cost. Average. Okay. Got it. Yeah. So let's say we started buying at 55,000 shares. Okay. Let's say Yeah. 50, 50 for 49, 5,000. 50, 49, 48 and 47. Mm-hmm. ठीक है? Each 200 Okay. shares we buy generally. Okay. So in that case, I am having 800 number of shares, Right. right? With the average Yes. cost, what should be the average price over here? 48.5. 48.5, probably. Yeah. Sorry, 48.5, something around between 49 and 48. That's what we have, right? 48.5, Right. right? Yes. So in that case, 48.5 my average cost. So that is what I am mentioning over here as a, यहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट है एग्जांपल में वो ये है कि अगर आपने स्टॉक्स बाय किए हैं तो आपका एट प्रेजेंट उसका एवरेज कॉस्ट कितना आ रहा है. दैट इज व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से ओवर हियर. Okay, so my next question is, Understandable, Lakshmi? Yes or no? I have one more question. Isn't it the same as average purchase price? In the next slide you have mentioned it under controllable, uncontrollable part. Okay. But one more So thing, if you Nishant, see, I'm a bit confused. Like you have said an example okay, like 50, it is okay, got it. depreciation. But what about it went a I bit higher and lower? Like the average even if cost. it is going higher or lower, see Okay. Anyway, your it's still the average cost, average right? buying Okay. cost. Okay. Yeah. Got it. Yeah, I was just Okay. confused. Sorry. Fine. Yeah, I'm good. So Lakshmi, you are still Lakshmi is still confusing about the average cost and average future purchase price, right? Yes. So Lakshmi, average cost is something what we have done. Like जो ट्रेड्स हमने ऑलरेडी कर लिए हैं उसका कॉस्टिंग क्या आ रहा है. जैसे अभी मैंने बताया कि मैंने 4 ट्रेड ऑर्डर्स पंच किए बाय के, हाँ. चारों बार मैंने 200 क्वांटिटी लिया तो मेरे पास टोटल 800 क्वांटिटी हो गया. Yes. और उसका कॉस्टिंग क्या आ रहा है अभी 4.5, 48.5. Yes. और इवन दो द करंट मार्केट प्राइस इज 47. हाँ. अग्री? Agree. अब नाउ फ्यूचर एवरेज परचेस प्राइस. सो इफ यू लुक एट द एसटीएम शीट तो हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि अगर फ्यूचर में नंबर ऑफ स्टॉक्स हमें बाय करने रहे तो हमारा किस पर्टिकुलर कॉस्ट पे बाय होगा. Yes. राइट? हर 1 रुपए के डाउन पे बाय करना है. Yeah. 50 to 0. सो मेरा मिड Yeah. पॉइंट 25 आ जाएगा, मतलब माई एवरेज विल बी 25. हाँ. सो ये फ्यूचर एवरेज परचेस प्राइस है. ये ऑलरेडी जो हमने किया है उसके बेसिस पे हमने कैलकुलेट किया है. Okay. नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि मैं क्या बोल रहा हूँ. दोनों अभी कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं, अभी नहीं है. Clear. Yeah, now it's good, Nishant. Yeah. Okay, got it. Yeah. See guys, Sandeep and Lakshmi is already like asking a few questions, so I am expecting that rest of you guys are not asking the question. It means that you are understanding all the concept what I'm discussing over here. Maybe probably they are also getting the same questions and it got answered. Yeah, there is a possibility. Yeah, probably. So Yes, Nishant, I have a question for you. I also got that question answered about average cost. I was also trying to ask the same question. Okay, so now you understand. Yeah. Now you understand, ma'am. Like अभी आपको क्लियर है?
Yes. Now it is clear. Okay, thank you. So yes, Abhishek, you were saying. So Nishant, you were saying, since you match actionable metrics average cost and you said you are basically comparing with the current price. So what if I don't take the current price, I take the other another controllable metrics. So what will be then? It will be same actionable metric for us or something else. See, I can manage the average cost according to me. Mhm. How? How? See, first I can control this Mhm. and I can make the decision on the basis of this. Okay. अभी क्या डिसीजन ले सकते हैं? As soon as I'll show the chart of the average cost versus price. ठीक है, वो प्राइस अगर मैं हम लोग शो करते हैं, एक चार्ट लेते हैं, बेसिकली क्या बोल रहे हैं हम लोग, एक्शनेबल मेट्रिक को क्यों बोल रहे हैं? अगर एक्शनेबल मेट्रिक हमें दिख रहा है तो उसके बेसिस पे हमें कुछ डिसीजन लेना है, दैट इज व्हाट द एक्शनेबल मेट्रिक, राइट अभिषेक? यस और नो? Yeah, totally right, Nishant. But my question is, since you are matching since the comparison between average cost and the price, and then you are taking some decision. My question is that what if you take target, or maybe like what example if the average cost is 48 and the target is let be 75. So can we make any kind of decision from that? Average cost is 48 and the target is 75. 75. No, nothing. We can see. What can we do? Target is 75, average cost is 48. Mm-hmm. So in case we cannot make a decision, abhi the target is the what? It is the controllable variable basically. Okay. Understood now? Mm-hmm. You look at this next sheet. Target is controllable variable. Controllable. Exactly. So with the help of controllable variables, I can outperform the things, or I can make the performance the better of the strategy. Okay. But it is not necessary कि हर एक एक्शनेबल मेट्रिक को हम लोग हर वेरिएबल से कंपेयर कर सकते हैं. Okay. So this is what now the Right. point I want to highlight. Like, if you can repeat and so that other can also understand. Okay. So basically, guys, what Abhishek is saying कि अगर मैं एवरेज कॉस्ट को y एक्सिस पे रखता हूँ और x एक्सिस पे मैं रखता हूँ टारगेट को, तो क्या मैं डिसीजन ले सकता हूँ? सो नो, इट इज नॉट नेसेसरी. ये जरूरी नहीं है कि हर कंट्रोलेबल वेरिएबल मेरा पर्टिकुलर एक्शनेबल मेट्रिक को इम्पैक्ट करेगा. That is what you are saying, Abhishek, right? Exactly. That's what I want to highlight. Yeah. Nishant, हाँ सुमित. in previous slide you said average cost is controllable, right? Okay. And in the next slide you are saying future average purchase price is non-controllable. हाँ, right. Explain करो इसको थोड़ा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. Okay. Basically, you are trying to compare both the two different things. एक तो actionable metric है मेरा. Average cost is the actionable metric. अगर मैं average cost को price versus price के एक चार्ट में अगर रखता हूँ, so can I make a decision or not? मेरा क्वेश्चन ये. Okay, you can. You can. I mean, I can, right? What decision I can make over here? कि अगर मान लीजिए मेरा एवरेज कॉस्ट आ रहा है 48 और मेरा आगे मार्केट प्राइस 50 है, विच इज प्राइस, सो आई कैन सेल द शेयर्स. राइट, अग्री? Yes, yes. और अगर सिमिलरली ये 50 की जगह 45 है, 45, सो इन दैट केस क्या हो रहा है, मेरा एवरेज कॉस्ट आ रहा है 48 लेकिन मार्केट प्राइस 45 है, तो आई कैन नॉट सेल द शेयर्स, और आई शुड नॉट सेल द शेयर्स. So no, this is okay, but you said ना कि average cost is controllable. How? हाँ, ओके. मतलब एवरेज कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करोगे तुम? दैट इज डिपेंड ऑन प्राइस पाथ एंड प्राइस इज नॉट कंट्रोलेबल. ओके, लेट मी शो यू. जस्ट अ मिनट. अगर मेरा क्वांटिटी सेम है एवरेज कॉस्ट का, तो मेरा एवरेज कॉस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. लेकिन इफ आई मेक अ लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी एट द सेम प्राइस, देन माय एवरेज कॉस्ट आई कैन मैनेज. Are you able to Okay. understand? Let's say for every 1 rupee drop, I am buying 200 number of shares. Mm-hmm. Right?
50, 49, 48, and 47. So somewhere around my average price is 48.5. Now all of sudden 46 rupees, I bought 2000 number of shares. So can I manage the average cost, or can I reduce the average cost in that case? Yeah, you can reduce. So that is what the answer you are asking about, right, Sumit? So that's how I can manage the average cost, or I can reduce the average cost by buying Okay. the large number of the quantity of the shares. Okay. You can make bigger trades. Okay. हाँ Got it. हाँ हाँ. But Okay, but in continue. but ideally we can't do it, na? मतलब In STM, this is not how we trade. no, see, STM is doing its STM work. Okay. If I want to make This is a general thing, right? हाँ 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 Okay. हाँ. This is basically I'm just trying to say कि I can control it. So that is why I consider it as a actionable metric. अगर मुझे कम करना Okay. है तो मैं कर सकता हूँ. I have an option. Right, STM right. in a generalized STM वो तो अपना काम कर ही रहा है, वो नहीं करने वाला ये. But yes, I can do it. Okay, got it. And so future average purchase price is also controllable, na then? No. It cannot be controllable. Why? First of all, it is a control or non-controllable variable. It's totally dependent on the price. Totally depend. ना बट यहाँ पर भी तुम बड़ी ट्रेड्स कर सकते हो ना फ्यूचर में. हाँ प्राइस कंट्रोलेबल है. फ्यूचर में ना, हाँ फ्यूचर हाँ. वही मैं दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. एक बात बताओ, जब हम फ्यूचर एवरेज परचेस प्राइस कैलकुलेट करते हैं तो क्या मैं 25 से उसको डायरेक्टली खुद से 24 या 26 लिख सकता हूँ क्या? ओके, सो यू मीन करंट फ्यूचर परचेस प्राइस. हाँ, डेट ओके डेट ओके. एवरेज कॉस्ट वाज द प्रीवियस वन, वो तो हिस्टोरिकल बात कर रहे हैं. ये फ्यूचर एवरेज परचेस हमारा तो फ्यूचर वाला है कि अगर स्टॉक जीरो जाता है तो ये सिचुएशन बनती है, राइट? ओके ठीक है आई कैन समझ. नॉट कंट्रोल इट. अगर मैं डायरेक्ट चाहूँ तो 25 से 26 नहीं लग सकता, या इसको 25 से 24 नहीं कर सकता. आई हैव टू डिवाइड बाय 2 विद द प्राइस. सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ओवर हियर. राइट, ठीक है. या Okay. क्लियर. ओके. Okay. Is there any other doubt, guys? Order size, steps above target number of stocks. Yes. Nishan, I don't understand about target. Okay. Target why it is controllable variable, ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ. Got it, मैम. Got it. सी चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ एक एग्जांपल. Wait a minute. I'll just share. I have a question. हाँ, yes please. Is number of people in the audience, is that a controllable variable or uncontrollable variable? कंट्रोलेबल सर. Controllable. Controllable. 30 आ गया Controllable भाई. according to me. There is a question, sir. एक बार आप repeat करेंगे please? I was asking whether the number of people in the audience, whether that is a controllable variable or uncontrollable. 30 पहुंच गया ना आज? Yes. So over here, Maitri ma'am, I would like to explain what I was just trying to say, right? So in this first example, ये example किसी और चीज के लिए मैंने बनाया था, but I am using this for your answer as well. Okay. हाँ, अभी आप देख सकते हैं लास्ट में एक टेबल दिख रहा है आपको, वेरिएबल हाँ. वैल्यू, राइट? हाँ. इस पे टारगेट प्राइस मेंशन है. हाँ. सो व्हाट आई हैव सेड इन दिस केस कि वेरिएबल क्यों कंट्रोलेबल है? टारगेट प्राइस हाँ. इट इज अ कंट्रोलेबल वेरिएबल Okay. बिकॉज इन दी एसटीएम यू हैव सीन कि मैं टारगेट प्राइस अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ, Okay. राइट? सो बेसिकली ये तो मैं बोल सकता हूँ ये कंट्रोलेबल है. मतलब टारगेट प्राइस हमारे पास कैश कितना है उसके हिसाब से डिसाइड होगा, राइट? नो नो देन वी कैन चेंज इट टू आपके हिसाब से. आपको टारगेट प्राइस आप कुछ भी रख सकते हैं. इट इज नॉट अच्छा. नेसेसरी कि आपके पास कैश कितना है उसके हिसाब से आपको रखना है. ओके. तो इन दिस केस यू कैन सी यहाँ पर अभी लेट्स से हम एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, राइट?
ओके। अभी आपको देख रहे हैं यहाँ पर कि मेरा 50 का स्टॉक का प्राइस है, टारगेट प्राइस मैंने 150 रुपये ले रखा है। हम्म। हर बार मैं 40 शेयर्स बाय सेल करता हूँ ओके। 1 रुपए के डिफरेंस पे, तो हम्म। इससे मेरा 40 रुपये एक्स्ट्रा कैश बनता है। अब ओके। आपको यहाँ पर ये जो मैंने प्लॉट दिखाया है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ हम्म। कि मेरा ब्रोकरेज कितना है, मेरा एक्स्ट्रा हम्म। कैश। हम्म। मतलब अगर आप देखेंगे ये रेशो, इट दिस रेशो शुड नॉट मोर देन 0.4। 0.4 ओके। का मतलब 40%। मतलब मैं हम्म। लेट से 100 रुपये एक्स्ट्रा कैश बनाया, तो मेरा हम्म। जो ब्रोकरेज का खर्चा है वो 40 रुपये, ठीक है 40 रुपये हाँ ज़्यादा हाँ। होते हैं, राइट। राइट राइट। इट मीन्स, तो अब आप ये एक प्लॉट को ध्यान से देखेंगे हाँ तो ये कितनी बार 0.6 पे भी गया है, हाँ। राइट। सो दिस इज अ रेड फ्लैग फॉर मी। हम्म। बेसिकली मेरे ऐप में एक ऐसा एक पर्टिकुलर ऑप्शन होना चाहिए कि वो हम्म। मुझे बताए कि भाई अभी जब ये ट्रेड्स हो रहे हैं तो मेरा एक्स्ट्रा कैश और जो ब्रोकरेज का रेशियो है वो बढ़ रहा है। हम्म। तो जहां पर मुझे पहले ये 0.4 लेट से, यहाँ पर आप देखेंगे तो 0.1 भी है। राइट इसका मतलब क्या था कि 100 रुपये एक्स्ट्रा कैश लगा के मेरा सिर्फ 10 रुपये ही ब्रोकरेज में जा रहा है। राइट। लेकिन यहाँ पर ये रेशो बढ़ के 0.6 हो गया, इसका मतलब अभी 60 रुपये जा रहा है। तो विच इज अब नॉट मैं राइट। ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग, क्या मैं कोई सी वेरिएबल को चेंज करके एक्स्ट्रा कैश को इन्फ्लुएट कर सकता हूँ? हाँ, डेफिनेटली कर सकता हूँ। तो कैसे, अब वो दिखाता हूँ मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके। लुक एट दैट दिस एग्जाम्पल। यहाँ पर मैंने क्या किया, इनिशियल बाय प्राइस तो सेम था लेकिन मैंने टारगेट चेंज कर दिया। पिछली बार हमारा टारगेट 150 था, ओके। अभी टारगेट 75 हो गया। तो टारगेट 75 हुआ तो मेरा अलोकेशन भी चेंज होगा, उसके हिसाब से मेरा ऑर्डर साइज भी चेंज हो गया, which is 200 now. Earlier it was 40. So ओके। now अब आप देखेंगे कि मैंने इस पर्टिकुलर चीज को मैनेज करके, टारगेट प्राइस को चेंज करके अपना जो है रेशो ओके। कम कर लिया, ब्रोकरेज इज टू एक्स्ट्रा कैश का रेशो कम कर लिया। करेक्ट। इट इज मैक्सिमम 0.3। राइट। सो अल्टीमेटली माई सेइंग इज कि हमारे ऐप में एक ऐसा भी कुछ एक्शनेबल मेट्रिक होना चाहिए जो हमें ये इंडिकेट करे कि अगर हम वेरिएबल को किस हिसाब से चेंज करेंगे तो मेरा ये जो ब्रोकरेज इज टू एक्स्ट्रा कैश का जो रेशो है, इट शुड बी लेस देन 0.4 और 0.3 अराउंड, ताकि वो ओके। मेरे पूरे एक्स्ट्रा कैश को ईट आउट ना करे, खत्म ना करे। ओके। ओके। सो दैट्स हाउ वी कैन फिगर आउट कि बाय चेंजिंग द वेरिएबल्स विच आर द कंट्रोलेबल, क्योंकि राइट। ये सारे कंट्रोलेबल वेरिएबल है। हाँ मैं हाँ। चेंज करूंगा तो मुझे ये वाले पैरामीटर्स चेंज होंगे। ओके। और इन अ सिमिलर वे अगर मुझे एक्स्ट्रा कैश बढ़ाना है तो मैं स्टेप साइज को भी चेंज कर सकता हूँ, ऑर्डर साइज भी चेंज कर सकता हूँ और टारगेट प्राइस भी चेंज कर सकता हूँ। ओके। गॉट इट। So with the help of this example, you would be able to understand कि why I am saying this target price is a controllable variable. ओके। या गॉट इट। Okay. Is there anyone would like to ask a question with respect to these things? What I have discussed till now. मतलब अभी ये out of the box question आया था, तो I have to like discuss about this with these particular example. Earlier I was trying to show this example later on. Is there any question with respect to this? Is it fruitful for the us? What is your call, guys? अगर हम लोग ऐसा कोई सा मैट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं विच शो अस कि आपका ब्रोकरेज जो है वो ज्यादा हो रहा है एक्स्ट्रा कैश के कंपैरिजन में, शुड वी इंट्रोड्यूस दिस मैट्रिक और नॉट? दैट इज द क्वेश्चन. Yes. Yeah, probably yes. Yeah, that will be a Nishant, good I have one question. thing. Yeah. Okay, got it. Nishant, I have one question. हाँ विनय. Can variable can be a actionable metric? Sorry, variable? Can variable can be an actionable matrix? No, I guess no. Like target price, because when I get the target price, I'm selling my all stocks. So can it be a actionable metric? You are saying एक बार और एग्जांपल देना, what you are saying एग्जांपल. Like that, मैंने 50 का स्टॉक लिया है, मेरा 100 टारगेट आ गया है, I'm selling my all stock at 100. So it will be a
Actionable metric, the target price. नहीं, टारगेट प्राइस इज द वेरिएबल ना फॉर यू, क्योंकि तुम वेरिएबल के थ्रू उसको चेंज भी कर सकते हो. But it can be ना actionable metric because I'm getting वहां पे मैं पूरे अपने सेल्स कर रहा हूँ स्टॉक. लेट्स से So for फॉर me it can be. लेट्स से यहाँ पर मैंने टारगेट लिख दिया 100, राइट. Yeah. और एक्स एक्सिस पे क्या लिखने बोल रहा है तू? दैट इज व्हाट यू आर सेइंग ना विनय, कि 100 मेरा एक्शनेबल मेट्रिक है. yes. हाँ, तो मैंने 100 यहाँ तो लिख हाँ, दिया. वो actionable metric है. Yeah. हाँ, सो टू विच आई एम कंपेयरिंग ओवर हियर. Okay. अच्छा, तू सिंपल सा एक बात बता, कोई सा ऐसा नॉब है जिसके थ्रू मैं टारगेट प्राइस को कंट्रोल कर सकता हूँ? इफ Target price एनीथिंग, को. हाँ, अगर मैं कुछ चीज चेंज करूँ तो मेरा इम्पैक्ट टारगेट प्राइस पे पड़े, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है. नहीं. दैट इज वाई आई एम सेइंग यू कि दिस इज द इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट का मतलब ये हो गया कि उसका कंट्रोल उसका खुद पे, किसी और का इम्पैक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ेगा. सो दैट इज वाई आई एम सेइंग Okay. टारगेट इज द इंडिपेंडेंट कंट्रोलेबल वेरिएबल. Okay. ठीक है, Hmm. अभी समझा? Yeah. निशान, यस, हु इज, कौन बोल रहा है? निशान. हाँ So हाँ, in your other slide, there was a thing called open order price. ओके. In that open order price, हाँ, you mentioned it's a non-controllable. नॉन कंट्रोलेबल, राइट. This is open order, this order not executed. How हाँ, can I राइट. not control? I can change the order price, right? The open order price at any point in time. सो यू आर सेइंग कि अगर मेरा एक ऑर्डर ओपन है, लेट्स से Correct. 50 पे 60 पे, तो कैन आई चेंज इट और नॉट, राइट? दैट इज व्हाट यू आर सेइंग. I can change it. See, हाँ, till the order is open, not executed. I can change the price to whichever price I want. नहीं, So but how it is actually non-controllable? it is No, no, an no. executed open order price of an executed order. It is by definition, we call it open order price, but it's actually the open order price of an executed order. Then It it's is only after the order is executed that that price is recognized as an open order price that can be used in that chart. Making sense? yes, yes, that's true. Yes, sir. Okay, got it. 1 minute, guys. I have to go back where I left. Question हम क्या debate कर रहे हैं अभी? What exactly is the question we are debating? Sir, actionable and the vanity metrics in the STM. अच्छा. Yes. First चल रहा है, second question चल रहा है, क्या चल रहा Sir, basically it is a second question. है? अच्छा अच्छा, ठीक है. Yes, sir. Abhishek, so from my side, it was an actionable and vanity metrics, what I have shared till now. So is there any counter question would you like to ask, or Yeah, Nishant, I will like to go with the same flow. Let me share my screen first. So just one second. I'm just showing the app. Just let me know if my screen is visible or not. If the app screen is visible. Are we keeping a list of actionable metrics somewhere कि अभी तक कौन-कौन से actionable metrics discuss किए? Yeah, sir. Yes. Nishant has shown the list. Huh? अच्छा, ठीक है. So is my app screen is visible, guys? Yes, 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 yes. Yes. So I'm going to talk for some of the analytical we have put in the our app. So let me start with the very basics question. So then I will come because it's not viable for me to just tell that what is profit actionable hai ya non actionable hai ya uncontrollable metrics. This way I feel that this is the cramming method we can follow. So we can go with the question and then we'll come to the these kind of analytical tools. So let me again reshare my screen of the PPT and just guys 1 second. PPT.
1 second, your page is not getting shown. Okay, fine, I got that. So, let me put for the question here. So my question is, as we in the analytical tool got to know about stock value versus the open order price and the stock value versus the number of stocks. So my question is that I'm going to show you the graph of it. But initial for the question is very simple. That the question is the stock value versus the number of stock chart isn't the just showing how much your stocks are worth. Like it's believed that कि जो स्टॉक वैल्यू और नंबर ऑफ स्टॉक्स को जब हम कंपैरिजन लेते हैं तो वो बताता है कि लेट मी बोल्ड दिस थिंग फॉर यू second. Yep. The stock value versus the number of stock charts isn't just showing how much your stocks are worth. So if we go to the app and yes, so I have simulated some of the data from Tata Motors. So let me click stock value and the number of stocks. So if you see the graph of it, so guys, I just want your help from it. So what you are seeing कि आपको एक क्या चार्ट दिख रहा है? Anyone can. It's a rising chart. लाइक आपको एक कंटिन्यूसली प्राइस इंक्रीज होता दिख रहा है और स्टॉक वैल्यू भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती दिख रही है. एवरीवन इज एग्री ऑन दिस पार्ट? Yes. I mean, Yes. you Yes, have two Abhishek. plots there. Okay. In a way, you have, there's a bunch of trades that correspond to one line, and then there's another set of trades that correspond to another line. Another line, exactly. So my question is that कि as I show you कि the stock value हमारे पास y axis में है and x axis में हमारा number of stocks है. So ये हमको this chart is just not showing that कि stocks का कितना worth है. Like for example मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक point of time पे मैं highlight कर रहा हूँ कि let example कि 475 पे ये price है. Let it be this way. तो अभी प्राइस है मेरा स्टॉक वैल्यू है 486 और नंबर ऑफ स्टॉक्स में इतने हैं. तो मेरे पास अभी कितना स्टॉक वर्थ है ये नहीं बता रहा है. जस्ट आई वांट टू हाईलाइट कि दिस इज नॉट शोइंग कि is my voice is getting echoed or No. It's good. You're fine. It's clear. It's yeah. clear. So if we see at this point of time, it's not showing the like stock का कितना वर्थ पे है स्टॉक. लाइक स्टॉक का एग्जैक्टली मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरा 50 रुपीज पे प्राइस है और मेरे पास 1000 क्वांटिटी है, सो आई एम नॉट जस्ट शोइंग कि 1000 क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 50 इज लाइक 50,000 मेरा इस टाइम पे स्टॉक वर्थ है. ये ग्राफ आपको कुछ और एक्स्ट्रा दिखाता है एंड व्हेन आई शो यू क्या एक्स्ट्रा दिखाता है जिससे आपको क्लैरिटी होगी. I guess somebody's mic is on. My voice is getting echoed. Vinay, I guess Vinay's mic is on. Vinay, if you can switch off the mic because my voice is getting echoed. Yes, continue, Abhishek. Yeah. So as of now हमको ये समझ आया कि ये प्लॉट सिर्फ यही नहीं दिखा रहा है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ प्राइस पे कितना स्टॉक का वर्थ है. ये हमको ये भी बताता है कि हम एक जैसे जैसे प्राइस नीचे गिरता है, जैसे हमको पता है कि स्टॉक का जब प्राइस नीचे गिरता है तो हम कंटिन्यूसली अपने स्टॉक्स को मतलब हम बाय करते चलते हैं और हमने एक फिक्स क्वांटिटी फिक्स करके रखी होती है. सो इंस्टेड ऑफ जस्ट टेलिंग यू कि हाउ मच यू हैव, लाइक इससे ये मत एनालाइज करना कि मेरे पास 460 रुपीज प्राइस पे जब स्टॉक चल रहा है मेरे पास कितना स्टॉक वर्थ का अमाउंट वैल्यू है. ये नहीं बताता. दिस चार्ट आल्सो टेल यू कि एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम आपको एक कॉस्टनेस तरीके से डिसीजन लिया जा रहा है एज विद योर कैपिटल एज अ प्राइस चेंजेस. लाइक फॉर एग्जांपल जैसे जैसे प्राइस 470 से 460 आ रहा है, 450 आ रहा है, 400 आता जा रहा है, एवरी पॉइंट जो उस प्राइस लेवल पे आ रहा है, वी आर नॉट जस्ट टेलिंग यू कि स्टॉक कितना वर्थ है. ये आपको प्लॉट ये भी बताता है कि एक कितना कॉस्टनेस और बोल्ड डिसीजन लिया जा रहा है विद योर कैपिटल एज अ प्राइस चेंजेस. आप पे कैपिटल बहुत सिस्टमेटिकली ट्रेड की जा रही है. फॉर एग्जाम्पल हमको सिस्टमेटिकली एक बात जरा एक्सप्लेन करो, ये इसमें ट्रेडिंग कौन से पॉइंट पे स्टार्ट हुआ और लास्ट ट्रेडिंग पॉइंट कौन सा है? सो इट स्टार्टेड विद सर यहाँ पर 442. तो लास्ट ट्रेड कौन सा है? सर लास्ट ट्रेड है 508. तो 442 पे स्टार्ट नहीं होगा ना? कितने पे स्टार्ट? वहां से होगा ऊपर से या
464 Yeah. वहां से स्टार्ट हुआ, फिर नीचे आया, फिर ऊपर Yes, गया. 460. Yes, sir. 464 से start हुआ and the last point was 508. Right. So basically what this plot is telling us is that जब वो second line आई है, Yeah, this line. so if you just look at the plot where you started from, right? The first trade that you started from, right? from the initial buy, right? Basically you had how many shares? You had कितने Uh, shares थे तुम्हारे? कितने shares थे? so 3 देखना. lakh, नहीं, 3 how lakh, many shares did you have? So no, actually, sir, this is a stock value versus number of stocks. है. yeah, stock No, value that's what was I'm asking. How many shares did he have when he started? Na? 464, sir. 464. 464. Yes. And the stock value was 3,30,391. 3,30,000. So abhi jab when he came back to 464, I mean he does not have a trade where the number of stocks is 464, but the plot crossed 464 again, Yes. right? Right. And the stock value was lower Right. while you had the same number of shares, Right. Yes. right? So Right. what that implies is that basically the price was lower. At a lower price, you had the same number of shares. Right. 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 Firstly, were you running STM in this, or what were you running? So STM only. STM only. Yeah. So I'm trying to understand how you ended up with the same number of shares at a lower stock value. फिर से echo हुआ क्या? Yeah, Abhishek, sorry to interrupt. Go ahead. Like, let's say, how you can start explaining this chart? Maybe can you just come again, actually? तुम्हारे पास trades listed हैं क्या? Yes, sir. है ना. Abhishek, Yes, sir. can you show the list of these trades? How many? 1, 2, 3, 4, 5, 6 trades. Yes. So मैं probably, दिखाता yeah, that would be a bit understanding. Yeah. हूँ. Trades and कोई CSV फाइल होगी ना जिसको डाउनलोड करोगे तो सारे ट्रेड्स दिख जाएंगे. हाँ सर वही Top of the chart. Ticker. You need to select the ticker. Scroll down. Right. ऊपर. Yeah. Okay. Yes. मेल Okay. आईडी में आएगी. हाँ. ये इंस्टेंट आ जाती है कि थोड़ा टाइम लगाती है? Instant आ ईमेल जाएगा. आएगा ना. आ गया इंस्टेंट आ गया. 1 सेकेंड. यहाँ पर भी दिखेगा कॉन्फ्लिक्ट्स. नहीं खुल गया. बस खोल रहा हूँ मैं. ठीक है, सिमुलेशन मोड में किया था. यस सर सिमुलेशन मोड पे. अच्छा. लेट मी शेयर माय स्क्रीन. ये रहा सर. Convert. So this is the So Abhishek, you're sharing the screen? yeah I have shared the screen now. Excel sheet But is not. Right but now I'm it's not not able to sharing. see. You're I'm not not able to sharing. see. Okay, just let me know. Is it visible now? Yeah, Yes. yeah, now it's Yes. good. Yeah. थोड़ा Let me साइज बढ़ा दे. थोड़ा साइज बढ़ा दिया. हाँ अभी ठीक है. So you started off by. नहीं, ये तो वैल्यू दिखा रहा है.
ऑर्डर्स कहीं दिख रहे हैं क्या? ये तो एक्चुअल वैल्यू दिखा रहा है ना। नहीं सर, ऑर्डर्स नहीं दिखा रहा वो CSV फाइल। ऑर्डर सर आपको हमको ऐप के अंदर ही दिखेगा, ट्रेड्स एक्टिविटीज के अंदर। नहीं नहीं, there is a एग्जीक्यूटेड। downloadable CSV file in the हाँ trade हाँ सर, section. यस। ओके, 1 सेकेंड। Go to the trade section. ट्रेड सेक्शन। लैडर्स जो टैब होता है ना, उसमें है वो CSV वाला डाउनलोडिंग में। हाँ, उसमें स्टॉक के नाम के सामने ही एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेगा तो आ जाएगा। तो लेडर्स में गया एंड नहीं नहीं नहीं, लेटर्स पे जा। हाँ, टाटा मोटर्स पे गया। बस ये नहीं, देन एग्जीक्यूटेड ऑर्डर दिख रहा है सामने। ऊपर में भी ओके, है ना CSV। इसको डाउनलोड कर लो। हाँ हाँ। हाँ मतलब वो लैडर CSV वही है क्या? आई गेस नो, वही होगा। इट विल गिव यू द एग्जीक्यूटेड ऑर्डर लिस्ट। हाँ, ओके दैट इज। ओके। आगे पे मैं ओपन करता हूँ। Soon the joke will become, how many DD employees does it take to run the DD app? I agree. I agree, Pratik. I totally agree. एक्सेल शीट, दिस वन ऑफ टाटा मोटर्स। दिख रही है स्क्रीन अब, आई गेस। हाँ, Yeah, yes. Okay, yeah. तो वी Is हैव I think one column you have is column L, एल। ओके, which is showing the orders being placed. एक बाय सेल का भी है क्या कोई कॉलम बाय सेल का? ये सर डी ऑर्डर टाइप डी। उनको हाईलाइट कर दे, बेसिकली कलर कर दे, ठीक है सर। so that we'll focus just on those columns. एक प्राइस का कॉलम, एक प्राइस नंबर का ऑफ ऑर्डर्स एंड एक बाय सेल का कॉलम। प्राइस का कॉलम। ऑर्डर एग्जीक्यूशन प्राइस है सर, ऑर्डर एग्जीक्यूशन प्राइस का कर दूं हाईलाइट? वो तो कर ही दे। नहीं, I don't think you need order you need order price, open order price. ओपन ऑर्डर प्राइस होगा जे कॉलम में। J column. जी कौन जी जी। ठीक है। हाईलाइट मतलब उस कॉलम का कलर चेंज कर देना। ठीक है सर, ये नंबर्स को क्यों रेड ग्रीन कर रहा है? कर देते। एक मिनट, अरे मैं कर रहा हूँ सर, वो हो गया था। लाइट ग्रीन यूज कर लेना। ये क्या कलर यूज कर रहा ठीक है, लाइट ग्रीन। लाइट ग्रीन। That's better. है? ओके, सो थोड़ा साइज बढ़ा दे। जूम कर ले। चाहे तो बाकी कॉलम डिलीट भी कर सकता है। बाय सेल मिल गया तेरे को, प्राइस मिल गया, नंबर ऑफ शेयर्स मिल गया, राइट? तो स्टार्ट कहाँ से, प्राइस कहाँ से स्टार्ट हुआ? सर प्राइस 655 सर। 655। 655 पे स्टार्ट हुआ, फिर नेक्स्ट क्या हुआ? 669.45। थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा दे यार, इतना क्यों छोटा करके रखा है? सर ये कॉलम्स डिलीट कर दे बीच के, अभिषेक। या हम्म ये एफ कॉलम भी डिलीट कर दे।
राइट। अच्छा, अभी थोड़ा और बढ़ा दे, फॉन्ट साइज और बढ़ा दे अच्छे से। हाँ, 655 पे बाय किया, फिर 689 पे सेल किया, फिर 683 पे फिर से सेल किया, नहीं 669 पे सेल किया, 683 पे सेल किया, फिर 740 पे सेल किया, फिर 720 पे 26 पे बाय किया, फिर तीनों बाय किए, राइट। ये लास्ट वाला सेल किया सर। लास्ट वाला सेल किया। हम्म। तो नंबर ऑफ स्टॉक्स वापस कैसे आ गए? व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ 508 पे इनिशियल बाय किया, उसके बाद तो सेल करता गया। यस। तो नंबर ऑफ स्टॉक्स वापस 508 पे तो कोई सीन ही नहीं लग रहा, बिकॉज you sold 66 shares and you never bought those 66 shares back. एग्जैक्टली। कुछ गड़बड़ लग रहा है, हाँ? ये हर्षल को भेजना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ लग रहा है। लेकिन ठीक है I've सर। seen something wrong with हर्षल that. हर्षल तो यही है ना अभी। ये मतलब वो सवेरे भेजना पड़ेगा। हर्षल will have to check कि these numbers are not adding up basically. हम्म 508 पे या प्लॉट दिखा, प्लॉट। ओके सर। स्टॉक्स Yeah, I में। think I think तुमने डिस्क्राइब गलत किया। तुम स्टार्ट किए टॉप पे ओके। and then you came down and then you increased again. That's what happened. So plot दिखा, your starting trade is 508, या so you really 508। started at the top. Yeah, यस। उल्टा बोल रहे थे, and then the prices came down, and then when you came, so when you finally reached that green button at the end, the green point, that was your last trade. यस सर। So that was a sell. So green is sell, red is buy. ऐसा है? नहीं, यस सर। green is buy. ग्रीन इज Green बाय, is रेड buy. इज सेल। या। Red is sell. Acha. So then, okay. So now come back to the chart. यस। Come back to come back to the spreadsheet. Yeah. ओके। शीट। यस। So last trade is, ये कॉलम एफ को वो कर सकता है क्या? हाइड। नहीं, हाइड नहीं। कॉलम एफ को इसका फॉर्मेट सेल्स कर, फॉर्मेट सेल्स, फॉर्मेट्स। ओके। और इसका नंबर कर, नंबर, और ये लास्ट रो सिलेक्ट कर इसमें। या ओके, या अभी क्लियरली दिख रहा है कौन कौन से सेल हुए। Yeah. Now I think it's good. सो लास्ट सेल हुआ, उसके पहले दो बाई हुए, उसके पहले सेल हुआ। So the lowest point you had was where you had 508 minus 66. 508 minus 66 gave you 442. यस। That was the bottom. Acha. And then 442 के बाद you went to 442 से you went to 450, 466. अभी भी it is not making sense. 466. लास्ट सेल पे तुम्हारा नंबर ऑफ स्टॉक्स इंक्रीज कैसे हो रहा है? गो बैक टू द चार्ट। यस। The last thing is a buy,
लेकिन Yes, तुम्हारा शीट बोल रहा है that the last thing is a sell. exactly. कुछ गड़बड़ आ रहा है. 442 तक तो सब ठीक था. Yes, Because you were 442. selling, you went all the way down to that point. But after that, you had another sale. That sale should have resulted in a reduction in number of shares. Last के दो trades क्या हैं? So अच्छा, last. you know what is happening? I think I understand what is going on. Mm-hmm. पहले तुम्हारा buy हुआ and you Okay. got a green. The green Yes. dot is not where the last your last trade is. Your last trade is where that red dot is. Yeah, this is your last Yes. trade, Yes. right? Okay, cool. I mean, basically what is happening is each time you return to the same price, your stock value is higher. Yes. So So in a way, it is an actionable bit. Yeah, go ahead. question is, if our last trade is this red dot, then what that green dot is for? That is a buy, na? That is the last buy that occurred. दिखाना अपनी sheet दिखाना. उसमें तो I think sell है last. ये वही ना last वही. That's why that's a red dot. Yeah, screen. See, your last order is a sell order. And the number of shares देखना कितना add up कर देना सारा ये numbers ऊपर से नीचे तक कितना होता है. नहीं जो stock या ये Okay. कितना आ रहा है. एक मिनट. एक कॉलम बना लेना उसमें दिखा दे कितना स्टॉक्स कहाँ पे कितना है. Okay. Insert. नहीं क्या कर रहा है. Sorry. ये कर क्या रहा है. सीधा पहले लिख F2. सीधा F2 लिख. पहले रो में सिर्फ F2 लिखा. अब इसके नीचे आ जा. नेक्स्ट में आके लिख दे G2 प्लस F3. अच्छा अब इसको ड्रैग कर ले. राइट. So the last buy happened and you had 464 shares. Yes. And then after that you had 453 shares. समझ गए ना लक्ष्मी? No sir. क्या नहीं समझा? सर मतलब लास्ट ट्रेड अकॉर्डिंग टू द चार्ट वो ग्रीन डॉट लास्ट है ना? नहीं ग्रीन डॉट नहीं है लास्ट. रेड डॉट लास्ट है. Okay. But it is Go back to above the the red dot. No, green dot is above the red dot. नहीं वो जो प्लॉट हुआ है ना, that plot is such that you actually went back from the green to the red. But तुमको ऐसा लग रहा है. Okay, go back to the chart. इस चार्ट में you actually traveled from the top green dot all the way down to the last red dot, the bottommost red dot. Then you went from that bottommost red dot to the green dot. And then from that green dot, you came to the middle green dot. Okay. हाँ, got it now. Right. Now, the Excel Good. file, there are two buys, okay, one after the other. Right, the two buys are not there, I think. Correct. Hmm. Two Here buys the are two not there. No, दिखाओ कहाँ है? सर कैसे दिखाना वो शीट एक्सेल दिखाना. रीशेयर करता हूँ एक बार, वो दिख नहीं रहा होगा. एक्सेल ये रहा. हाँ तो इसमें row 6 and row 7. row 6 463 453. See the reason you are not seeing the other green dot is because it is hiding behind the red dot. Yes. It's overlapping. 450. Okay. Hmm. It's overlapping. Yeah. Right. Right. स्टॉक वैल्यू का कोई कॉलम है क्या? Stock value. Let me find some.
नहीं सर, स्टॉक वैल्यू का कॉलम। जैसे नाम कुछ और होगा यार ऐसे नहीं। अच्छा, ये हो सकता है या ना हो, बिकॉज दिस इज नॉट प्लॉटिंग स्टॉक वैल्यू. 3 लाख करके फिगर है ना, कुछ ऐसे ही, रुक जा बन जाओ शायद। हाँ, I mean, stock value should be easy to calculate. Let's just calculate the stock value. ओके, एक और कॉलम ऐड करो. प्लीज। Multiply G विद with प्राइस। current price. जो भी प्राइस है, प्राइस कौन सा है, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. ये तुम्हारा आ गया स्टॉक वैल्यू. तो दोबारा जो पहली बार जब 453 गया तो स्टॉक हेलो, वही। हेलो। हेलो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है। आ रही है, आ रही है। ठीक है सर, नंबर्स ठीक है आप सर। But one second, go to the graph. Check. ओके, या तो इधर उनका भी पॉइंट पे टच आइडिया जो है. Number of 332। stock is the value interchanged. Stock value is interchanged number of stocks. हम्म, This यस stock वाला इसमें 3 लाख लिखा था उसका, right? हाँ, वो गलत करेक्ट। दिखा रहा है। हाँ क्या देखो. क्या? अच्छा वैल्यू स्विच हो गए. यस, It's shown हर्षल, interchange. Like, हर्षल ये क्या हो रहा है हर्षल? हम्म, सर मैं हर्षल, ये दे, अम, ये लो तुम्हारे लिए कल का काम. ठीक है सर. ठीक है. चलो, I mean, good thing you pointed it out. You pulled out the graph, Abhishek. We got to understand it much better. सर ग्राफ में ओवरलैपिंग को किसी और वे से तो ये नहीं कर सकते, मीन्स वो ओवरलैपिंग हो रहा है देखेंगे तो. देखेंगे देखेंगे कल बैठ के समझेंगे क्या करना है. I mean, there is definitely room for better visual representation. करते हैं कल, कुछ करते हैं. ओके, चलो कुछ और, कोई और प्लॉट देखते हैं. बहुत हो गया टाइम इस प्लॉट पे. yes sir. So my question to come to the another plot is, what is the price doing and how does this affect my P&L? So like अभी यहाँ पर starting of the when Nishant was explaining, so somebody is tell कि आपने loss क्यों नहीं दिखाया, profit ही क्यों दिखा रहे हो. So now we are compulsorily telling कि जब price क्या कर रहा है और उससे मेरा P&L कैसे affect हो रहा है, और ये हमारी टू द हम कैसे स्विच करते हैं, एक एनालिटिकल हम ऐसा फाइंड करने वाले हैं इस ऐप में जो कि एक प्रोएक्टिव और डिसिप्लिन मैनर से हमको ले जाएगा till the point in my current inventory level. Let assume you have X shares and आप जैसे फॉर एग्जांपल हमको एस्टीमेट में पता ना कि जब प्राइस 50 से 51 जाता है तो हम एक सर्टेन नंबर ऑफ फिक्स शेयर्स सेल करते हैं, और जब 50 से 49 जाएगा सर्टेन नंबर ऑफ फिक्स शेयर्स बाय करते हैं. सो विद माय स्ट्रेटेजिक रूल गिवन द करंट प्राइस इज वाई. सो किसी को क्वेश्चन समझ आया कि आई शुड एक्सप्लेन लेट, मतलब अगेन. क्या है क्वेश्चन, क्या है फिर से बताओ. सो द क्वेश्चन इज दैट कि हमको जब प्राइस जिस तरह से रिएक्ट करता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, हमको ऐसा लगता है कि मेरा पीएनएल कैसे अफेक्ट हो रहा है, मुझे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है. हम इससे कैसे शिफ्ट हो जाएं एक डिसिप्लिन और प्रोएक्टिव टेक्निक में, जिससे मुझे ये पता चले कि जो मेरा इन्वेंट्री लेवल है, जो मेरा करंट इन्वेंट्री लेवल है, लाइक फॉर एग्जांपल एक्स नंबर ऑफ शेयर्स हैं, वो कंसिस्टेंट है, जैसे लाइक 200 शेयर्स बाय और सेल कर रहे हैं विद माय स्ट्रेटेजिक रूल्स. लाइक मेरी स्ट्रेटेजी रूल है कि मैं इतना बहुत इतना बहुत करूंगा. कॉम्प्लेक्स यार. तुम क्वेश्चन, तुम्हारा एक हिस्ट्री की स्टोरी लग रही है ये क्वेश्चन. हाँ सर, क्योंकि उस इसको एनालिटिकल टूल. सिंप्लीफाई करो. सीधा सा तुम ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि प्राइस से मेरा अकाउंट कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है, राइट? अगर वो तुम्हारा क्वेश्चन है तो as you know, the reason we are building this app is to shift the focus of the customer away from price. प्राइस को देखने से तो स्ट्रेस आता है. 90% स्ट्रेस तो प्राइस को देखने से ही आता है, राइट? और यस, easiest way to shift the focus away from price is to say कि जब इस प्राइस पे मेरा पोर्टफोलियो लास्ट टाइम था, तब मेरे पोर्टफोलियो का क्या स्टेटस था. व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ माय स्टॉक्स व्हेन द प्राइस वाज दिस प्राइस द लास्ट टाइम.
versus what is my portfolio's value when the price has returned to the same price. So now your actionable metric is the difference between the value of the two cases, not the actual value. Yeah. Like, so probably we'll just follow the trend, right? Like how it's going, the stock. What do you mean by that, Sandeep? Like let's say, I'll just check the historical data, probably like how the stock is going high or low. In that way, I'll just invest my money. No. Okay. What we are telling what we want our customers to focus on Mm-hmm. is that last time the price of the stock was 50, my Okay. account value was 200,000. Now Okay. when the price is returned back to 50, my account value is 225,000. Okay. When the price has returned to the same price 2 days ago, 2 days ago the stock was at 50, today it is back to 50. Right. But my account value is 25,000 higher. Right. So that is showing that my account is making some progress. Like some, yeah, exactly. So the actionable metric here is the difference between my account value today and my account value 2 days ago when the price was again at 50. Yeah, correct. When Yeah, we that. when we compare the account value at the same price on two different instances, automatically we are removing price as the independent variable. Okay, okay. Oh, okay. I get it. Okay. We are saying ki bhai, your account was at value 200,000 when the price was 50. Now the price is back to 50. Your account is 225,000. You should be happy. It does not matter whether the price has fallen or risen. Correct. It is immaterial. What is important is that at the same price, your account is at a higher value. Hmm. Sir, can I show a plot? Abhishek, can you please stop Sure, this? sure. Sure. See, if we want our customer to be stressless, they should stop focusing on the price. The more they focus on price, the more stressed out they're going to be. So, Screen visible is? हाँ, Right? दिख रहा है. Sir, is that you are talking about, right? That Yeah, exactly the same thing. Whenever the price return, whenever the portfolio return to the same price, what are you plotting? What is account value, right? Your account value is increasing at the same price. It does not matter that the price went down and then the price rose again. What right. matters is that each time it came to the same price, your account value is continuing to increase. So you're saying that that shouldn't, that will not be an actionable variable. Yeah, it is not, na, because you can't control the price. Exactly. So anyway, it may be go down or up, some whatever. Right. I mean, your focus should be, is my account at a higher value Higher than value it or not? Yeah. was? Yeah. If I have made some Got wrong decisions, then it will be at a lower value. it. Definitely. That should that. That is a possibility, right? Correct. If I That made is a some wrong possibility. decisions, the value could be lower. But Got it. STM, if you let STM run on its own, it will make sure that your account value at the same price keeps increasing. So, Yeah, maybe sometimes it may be go and up, but still that will maintain the stability. right. Got it. Yeah, So you- go ahead, So the way Nishant. we have to design our analytics Mhm. is such that the focus is shifted away from price. The customer, it should not see. I mean, main thing is if the stock that you own, if its Mhm. price drops, should you be happy or should you be sad? What do you think? Obviously, I'll be sad. Okay, now I'll ask you a different question. Mhm. Suppose you buy vegetables from the vegetable market, Okay. right? You buy mangoes. Every Mhm. time the price of mangoes in the market drops, are you happy or are you sad? In the market, if it drops, I'm happy. Right. So how come you are happy there but you are sad here? Uh,
Okay, yeah, You that's understand the paradox. yeah. The reason the paradox exists is because you are not looking at it as an opportunity. Price drop हुआ, it's an opportunity for you. You should be buying more shares. Yeah, probably at that particular time, I'm just thinking about that thing only. You're worried more about what is the price of the shares you own versus Yes, the opportunity the market has created for you to buy more, correct. Makes right? sense. So Completely makes ideally, sense. whether the stock price rises or falls, you should have no emotional reaction to it. You should just be ready to make use of the opportunity. Correct. If the price falls, it's an opportunity. If it rises, it's an opportunity. One is an opportunity to buy, the other is an opportunity to sell. Correct. That's the mindset we want our customers to have. Perfect. Automatically, they'll become stressless. Na? Obvious. Yeah. See, for example, one of our employees was having a discussion with Maitri the other day, right? Mm-hmm. And he was saying, हम कैसे बोल सकते हैं हम stressless हैं? How can we say we are stressless? If the price drops, it definitely stresses out the customer, Okay. right? And what we are saying is it stresses out the customer because the customer hasn't built the mindset that that's an opportunity. That price drop is an opportunity. It's not something to be stressed about, Yeah. Maybe right? the other day would be yours. I didn't understand your last sentence. Go ahead, Like finish. maybe, like let's say, see, if if let's say I've bought something today and the Mhm. price got dropped, What does may, the trading method do? If the price drops, what does the stressless trading method do? like It will. maybe like Nini, one of I'm asking you a question. uh You bought a stock. You bought a stock at 50, right? 50. Okay. Price dropped to 45. Okay. What does the stressless trading method do? Like it will give me some insights. Like Nini, whenever it it will go is. and buy more shares. Nah? This by definition, the Hmm. stressless trading method will go and buy more shares. Yeah. That's what. Like it will buy more shares and it will give me insights and it will get more profits. Nini, that's what I'm saying. By definition, the stressless trading method is looking at that as an opportunity. It's buying more shares because it considers it an opportunity. Correct. Yeah. And Makes then if the sense. price rises, it considers even that as an opportunity and sells. Right. So whether the price rises or falls, for the stressless trading method, it's an opportunity. Yeah, that doesn't matter actually. Yeah. That's why it's called the stressless trading method. It is not, what the person was telling Maitri was, when the price falls, how come I won't be stressed? I will be stressed. Yeah. But what we are trying to explain is that when the price falls, that's an opportunity. It is not something to be stressed about. Yeah. इस I पे get किसी it. को confusion है क्या? As Dozen Diamonds employees, none of us should be confused about that. If No, somebody no, is no. confused about this, please mention it. I'll make sure you understand the concept because this is a very important concept. It will happen again and again. People will always ask you, ये stressless कैसे हो सकता है method? And you should be able to explain that part. Yeah, I'm clear about it. Is anybody here who is not clear? Clear, sir. I'm clear. All of us clear on this, right? Yeah, so we have to demonstrate it to them that whether the price increases or decreases, the amount of the value of our portfolio is doesn't depend on that. Nee, of course, your account value depends upon the price. Okay. What does not depend upon the price is the opportunity. Okay. What we are saying is don't focus on the account value. Focus on how much cash you can withdraw from the account. Right. Right? Hmm. अगर तुम्हारे घर का वैल्यू मान लो आज तुम्हारे घर का वैल्यू 6 करोड़ है, राइट? कल कोई आके बोले इसका वैल्यू 4 करोड़ है. Will you get stressed by that? Yeah. Why? You're not looking to Because sell the house, right?
Of course, I'm not going to sell the house, but उसका So price why are गिर you रहा है. worried? जो तुम Okay. सेल ही नहीं करने वाले हो उसका So प्राइस like, कुछ भी हो, how yeah, does yeah. it matter? Now I totally get it, Pratik. Like, let's say if I don't have any intention to sell something, my house or my stocks or something, and let's say the market was going down, then why I have to worry Worry about it? about. So I have my तुमको own मालूम है thing. इंट्रिंसिक वैल्यू स्टॉक का ज्यादा है. So I अभी am pretty sure इंस्टेंटेनियसली. about my stocks that okay, it will go up. Yeah. I know that my house is valuable. I know its real value. I know that the stock I own is valuable. I believe in the company I bought the stock of. So picking up that stock is the main thing. Exactly. Yeah. The dropping of the price is creating an opportunity for you. You should be focused on that opportunity rather than being worried about the price that the market is telling you your stocks are worth. Makes sense. Right? That's why we keep saying to our customer, we are not going to pick your stocks. You pick your stocks. Because you better be in love with the company that you're buying shares of. And like one quick question I have. Let's say customer have picked some stock, and let's say we know that it is getting drowned, maybe that particular stock. Then we like, are we going to suggest that change it No, or we are something? not. That is a decision he made. See, there's a reason somebody becomes a retail trader. Because Okay. he believes that he is better at picking stocks than the mutual funds. But what if like he's making a wrong decision? That's his decision to make, na? That is So, what taking risk is all about. so like we are not accountable for that. We are not. See, our strategy is a market neutral strategy. Mm-hmm. You are continuously collecting extra cash from the market as the that's all we are providing. We are making sure that even if you lose money, you will not lose all your money. Yeah. In other strategies, you can literally lose all your money. Yeah. Okay. Okay. Here you are at Okay. least getting some money back continuously. So even if the stock goes to zero, you Mm-hmm. would be sitting with at least 50-60% of your initial investment. Exactly. Exactly. Yeah. In other strategies, you can lose everything you have. Okay. Okay. Hmm. Yeah. Right? Yeah. Because we are continuously withdrawing some money from the market, there is a possibility there will come a point where you will withdraw everything from the market. So that like the end customer, like, nevertheless, like what is the stock it may be? Yeah. Okay. Right? Yeah. But Get it. at the end of the day, he is the one. I mean, you can't go to the market and want to make money. You are essentially not, you're putting your money at risk anyway. Right. Right. But you can't go to the market. I want to put my money at risk. I want to make money without doing anything. Yeah, that doesn't But I work. don't want to lose any money. That is just not possible. Na? That doesn't work at all. Yeah. Right. I But totally at least we are guaranteeing that you will not lose all your money. got it. Right. Right. Right? That's what we come in place. Yeah. There is a mechanism that is focused on providing you a system for recovering your losses. Okay. Right? That is the Yeah. promise we are making. We are saying, there's a stressless way of recovering any loss that you might suffer. You don't need to be stressed out about losses as long as the company you buy. And if you're so worried कि भैया ये company बंद हो जाएगी, मेरे को I can't pick stocks because companies will close down. You can always pick an ETF. Yeah. It Yeah. is Right. guaranteed that any ETF, any decent ETF will not go to zero. Yeah. Yeah. That's for sure. Yeah. Right? Yeah. So that problem is also solved. You pick a decent ETF, you never have to worry about it going to zero. If it's not going to zero, if it's oscillating, you will in due time make back your investment. Correct. Makes sense. Okay? Sir, with this similar example, we can explain this also. Account value. Exactly. Yeah. कौन सा example बताओ तो क्या? Which example? Yeah. I think that will be great actually. Sir, yeah, see what sir is saying. Let's say you can see that अगर price 49 पे आया
So firstly, your account sitting at 4,96,000, right? Sunny. Mm-hmm. Yeah. Now next time price arrives at 49. So your account value in case of buy hold should be equal. Mm-hmm. But now here you can see 4,96,600. Correct. So that is what Pratik is trying to say कि अगर repeatedly stock अगर आपके stock sorry आपके initial buy के नीचे भी रहता है, Mm-hmm. so somehow we are able to recover our losses. That's what meant by extra cash. Yes, yes. So in case of other strategies, buy and hold, you are going to lose your 100% money. Obviously, that is completely Exactly. a kind of risk. But in case of STM, uh, if the stock is going 80% down, so we would not be able, somehow we would be able to recover those losses. So ultimately, our drawdown would be 60%. But in case of Mm. buy and hold, it would be 80%. Obviously, Yeah. yeah. That is a very better way, actually. Correct. Yeah. I get it. Yeah, yeah. So in a way, similarly, we can see over here in this chart. कि अगर कॉस्ट पे भी 50 था, पहला इनिशियल मेरा 5 लाख अकाउंट वैल्यू था, दूसरी बार जब Mm-hmm. 50 पे आया, Mm-hmm. so I 50 mean, this point was made to me by one of the professors in the process. I was interviewing him for a role in Dozen Diamonds. And he said, your real advantage is you have a market neutral strategy. And the advantage of a market neutral strategy is that it makes sure you never lose all your money, right? Most strategies that are focused on making 100 unconnected, independent trades, they always have the possibility that you will lose all your money. If all the 100 trades go wrong, you Mm-hmm. can lose all your money. Yes, yes. In case of STM, that is not happening. So that's the advantage, basically. So his take was you should totally just focus on marketing the fact that you are providing a strategy where you will not lose all your money. Mostly, his take was that traders don't even mind losing some money. Yeah, What really worries them is that they will lose all their money. exactly. That's what they'll get stressed. Stressed about, right? कि अगर मैं वही trade, अगर मैं if I'm gambling, Mm-hmm. then I can keep losing bits and pieces of my money every day until it goes to zero, and I'll have no control over the process. Probably even if it's like every hour also. Right. Yeah, So, I so totally I get mean, it. his take was that investors worry much more about losing all their money than losing some of their money. They can even even live with the fact that, okay, they lost 20% of their money, 30% of their money. Mm-hmm. But the possibility that they can lose all their money is what really bothers them. So, Yes, yes. Makes sense. Yeah. I mean, the point is, we as Dozen Diamonds employees have to be clear about all these arguments. Exactly. Like, Otherwise, the audience, the people you are talking to, the person you meet on the street, he is going to try to take you for a ride with all these weird questions, right? definitely. Yeah, yeah. And we should have all these points on our fingertips to be able to present a cogent argument. So, Yeah. Like frankly, yeah, speaking like before I've joined Dozen Diamonds, like I was not aware of it, but now within no time I've learned a lot. And that too only because of these webinars and all. Yeah. yeah. I So mean, I that's what think, I like. bolo, bolo. We have to more conduct more of these things. Yeah. Celia, I keep saying every weekend, every week, join here. This is where we should be uniting as a company, Yeah, yeah, where we correct. should be getting a singular thought as to how we are thinking about everything we are trying to present to the rest of the world. Right? Right, right. That's correct. But I mean, so what did we achieve till now today?
Nishant and Abhishek, do we now have a decent list of actionable metrics? So we have list, but we're still lot of things that fall apart. Like there's a lot of things to discuss, especially from my Right. side. Acha, how much time have we left? So We we can are end already up close 8:50, sir. there. 8:50. ठीक है. Wrap up करते हैं. The point is, because we are all just within the DD team, we can continue this discussion on DD team. Like every time somebody has a thought, or even Abhishek and Nishant, you can talk more about things you wanted to present today, or images you wanted to share today. You can present them in small bits and pieces over the entire week. You don't have to do it, at one go, but just continue the discussion on DD team itself, right? Awesome. Right, sir. Because this discussion is extremely important for us to build our analytics system. Right. Right. See, finally, we should be able to walk the customer through strategy to data. I mean, strategy to execution, from execution to analytics, from analytics to decision, and decision back to execution, right? That whole loop should be complete for the customer to feel कि भैया he's not only progressing, not only is his portfolio progressing, but he's learning something more and more about the behavior of his portfolio. So to complete that loop, we have to build a link between the data and the analytics, and then build a link between analytics and decision making. Execution तो automatically हो ही जाता है. Right. So let's continue this discussion on DD Yeah, maybe And like now, probably like this is good. That is fine. But other than Tuesday or something, maybe we can have some all hands or something like that in a week. I sincerely mean that. Let us try to have this discussion on DDT. Yeah, That is the best that should place to be. have this discussion because it gets all documented, na? Yeah, definitely. Because see, like we have every person will have their own perspective about this discussion or something. Right. And there they can write as much as they like. They can discuss as much as they like. Let us do this very energetically on DD team itself. I'm sure. Let us see. एक हफ्ता हम करके देखते हैं. Let's try to continue this discussion on DD team and see how far we get. If we need another format, a change in format, we'll think about that. But Yeah, let's try to definitely. do this for a week and see how far we get. Yeah, sure. That will be Is good. everybody interested in that? What do you think? Did anybody find this as a boring topic? This is not a topic worth discussing. ऐसा कोई है क्या? From my side, it was awesome. Yeah. That's it. Yes, Pratik, as I always say, I always enjoy these discussions. I get new things from it. And now today I this thought, I don't know whether I should be, but I want to share one thought that you have to write a complete book about STM. वो तो करना ही पड़ेगा. Like in Ah, due time. Let And us. I और mean, it's not very hard. I don't have to even write anything. I've got 6-7 writers now. yeah. and Right? yeah, and another thing is that I'm not sure about our strategies, what are they going to be, but this is just a loud thought which came into my head that you can have an entire coursework which will be divided into modules, and people will get a hang of the whole See, thing about STM. like Mamta says, nobody cares about learning anything. They're here Oh, only to make money. So let's first make people some money. okay. Then we'll try to teach them. And when they have free time, when they don't have to think about the market, then they'll be ready to read our books. Right. Yeah, like one more thing I want to add for it, like coming from a cloud or something, like my experience perspective, I've never been to this trading thing, but after coming here, actually, really, I learned a lot about trading and all these things.